starting with numerical number 10.9. An electric dipole of length 2 centimeter is placed with its axis making an angle of 30 degree. Now electric dipole, electric means there will be two charges, and this diagram is given along with the question. So here you have positive charge, here you have negative charge, and this is known as the axis. Okay, so now this axis is making an angle 30 degree with a uniform electric field. So suppose this is the direction of my electric field, and here the electric dipole is making 30 degree with its axis. The value of electric field is given as 10.5 Newton per Coulomb as shown in the figure. Okay, and the length of the dipole, see this is the center, from here till center it is L, and from here till here it is L. So total length of the dipole is 2L, which is 2 centimeter, which you will convert it into meter because Newton is an SI unit. So means electric field is in SI unit and Newton is SI unit. 2 into 10 raised to minus 2 meter. ये हो गया. Now if it experiences a torque, ये electric dipole experiences a torque 10 into root 3 Newton meter. Calculate the magnitude of charge on the dipole. Okay, now we know the formula for torque acting on the dipole. It is P sine theta. P is dipole moment, which is the charge, into the length of the dipole. So we will substitute the value of P, that is Q, to L E sine theta, that is my tau. They are asking you to calculate charge, so charge will be equal to tau upon 2L. See, this whole equation will come in the denominator on left hand side, E sine theta. Now keep substituting. Tau की वैल्यू क्या है? 10 root 3. 2L की वैल्यू मिली 2 into 10 raised to minus 2. 2 into 10 raised to minus 2. Then E, what is E? 10 raised to 5 into sine 30 degrees, which is equal to Q. Now 10 root 3, that is 1.732. अब ये रूट 3 की वैल्यू मुझे कहाँ से मिली? लॉग बुक लेने का, लॉग बुक में स्क्वायर रूट में जाना है, स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर रूट देखना है. 3 का स्क्वायर रूट, दैट इज 3.0. सी 3.0 का 0, दैट इज नथिंग बट 3. तो उसके 0 के कॉलम में अगर आप देख रहे हैं तो यू आर गेटिंग 1.732. सब्स्टिट्यूट किया. 2 into, now 10 raised to 5, 10 raised to minus 2, 5 minus 2 is 3. So 10 raised to 3 into sine 30. नेचुरल साइन में चलो, नेचुरल साइन में सी, नेचुरल साइन 30 का 0 इज 0.5, 3 by 0, 0.5 and 3 times 0, which is of no use, which is equal to Q. Okay, now 10 into 1.732 upon 2 into 10 raised to 3 into 0.5 को मैं 5 लिखती हूँ, और ये 0.5 डिनोमिनेटर में ना, तो न्यूमरेटर में मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर एक ही डिजिट है. ओके, ना ये 10 और ये 10 कितना हो गया? 10 raised to 2, यहाँ 10 raised to 3 है, तो नीचे डिनोमिनेटर में बचेगा एक 10. फिर ये हो गया 2 5s are 10, 2 5s भी हो गया 10, तो 2 10 आ गए डिनोमिनेटर में, वो दोनों 10 ऐसे लिखो. 1.732 अपॉन 10 raised to 2, 2 10 है, विच इज़ इक्वल टू चार्ज.
सो इट इज़ 1.732 इंटू 10⁻²। ये -2 ऊपर लेके जाएंगे, सॉरी +2 न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। एंड सिंस इट इज़ चार्ज यू विल राइट कूलम, सो इट इज़ ऑब्टेन्ड।